I'm sure you had some kind of a similar experience in media generally. क्या अच्छा ये भी होता है को लेकर वो A to Z समझाई ये जो तुमने फ्लो चार्ट बनाया है ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग्स उसकी वजह से आपको काम मिल जाएगा कभी नहीं होगा कटरीना कैफ ने क्या ऐड किया आपके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 101 के फ्लो चार्ट में एक साइलेंट मैस्कुलिन पेन दिखाई देता है आपके परफॉर्मेंसेस में Imagine like there's a weight of 2000 kilos on your shoulder. Men in general are conditioned to kind of suppress feelings and like ठीक है यार होता है ठीक है बस चल रहा है भाई डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस में आपका स्वागत है दोस्तों आज के स्टार ऑफ द शो है विकी कौशल भाई जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक चमचमाते सितारे हैं और बहुत सारे लोगों को इनके करियर के बारे में बहुत कुछ पता है इनके करियर की ट्रेजेक्टरी के बारे में बहुत कुछ पता है बहुत कम लोगों को इनके प्री करियर फेज के बारे में पता है इनके इंजीनियरिंग कॉलेज फेज के बारे में पता है आज मैंने उस फेज के बारे में ज्यादा बात करी काफी ज्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन करी इनके साथ इनकी साइकोलॉजी जानने के लिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि विकी कौशल हैज अराइव्ड कुछ लोग कहते हैं कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर मैं मानता हूं कि ही हैज अराइव्ड आज मैंने इनके दिल को जानने की कोशिश करी इनकी हिम्मत को जानने की कोशिश करी क्योंकि यही है हमारी इस सीरीज की थीम डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस पर देखिए 16 लेजेंड की 16 लेजेंडरी कहानियां ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे पर आज का एपिसोड बस बैठकर एंजॉय कीजिए दिस इज विकी कौशल ऑन टीआरएस लाइक नेवर बिफोर डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है विकी कौशल थैंक यू कैसे हो ब्रो मैं बहुत अच्छा हूँ आप कैसे हो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके ये मैं काफी सारे लोगों को कहता हूँ क्योंकि आजकल काफी सारे कूल लोग आ रहे हैं शो पे तो बहुत देर से मुझे आपसे बात करना था यार इवन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आल्सो जस्ट टू टेल यू कि बहुत कमाल काम कर रहे हो यार तुम और तुम्हारी पूरी टीम बिकॉज जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पे मैंने सुनी है एंड मैं कई बार मेरी आदत है कि कार्डियो करते समय पॉडकास्ट लगा लो एंड एवरीथिंग यहाँ पे मुझे कॉन्वर्सेशंस ना अपने लेवल की लगती है मुझे समझ में भी आती है एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक हाँ यार मुझे जेन्युइनली कुछ information मिल रही है and just it's not just information but I'm very happy to be here. No, we're happy to talk to you and personally I'm happy to talk to you. मैं भी आपकी तरह एक engineering college grad हूँ और अलग vibe feel होती है engineers के साथ. Yeah, I know. क्यों होता है? I don't know यार. I think something that we go through. It's just very trauma. No, I don't. I wouldn't call it trauma because actually for me those 4 years in engineering have been like the most beautiful 4 years of my life. Yeah. Yeah, seriously. Like I got some like lifelong friends who are friends till date. I passed out in 2009. So अब कितने साल हो गए like those friendships like वो जो दोस्त 2005 में बने थे first year में from the queue of admission form भरना और ये वो तब से दोस्त बने हुए हैं and जो experience थे मुझे ऐसा लगा like I became a boy to a man during my engineering days and that I feel that is one thing that happens to all engineering students. Yeah, I feel it turns you into an adult. क्योंकि आपको बहुत बार खुद को बचाना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज में असाइनमेंट सबमिशन के टाइम जब आप प्रोफेसर्स के साथ झगड़े करते थे. हाँ आपको लगी थी कितनी एक ही लगी थी बट BEE है बेसिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में PW में लगी थी मुझे 2 लगी थी जिसमें से एक मैं रिवैल में पास हो गया था सो इट वाज मैकेनिक्स इन CP कंप्यूटर्स मेरे बिल्कुल ऊपर से जाता था हमेशा सो वो कोडिंग समझी नहीं कभी नहीं समझ में आज तक भी नहीं समझ बट केटी लगी थी मुझे एंड मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया एक मिनट केटी मतलब बैक मुंबई में इसे केटी कहते हैं मतलब आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट बताइए सो मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया था कि इंजीनियरिंग में केटी लगना बहुत आम बात है सो डोंट गेट लाइक कि लड़का फेल हो गया जो आज तक फेल नहीं हुआ था तो मैंने बहुत प्रेप किया था सो व्हेन आई गॉट 2 केटीज दे वर लाइक चल ठीक है यार तुम्हें समझाया ही था कि केटी लगती है एंड यू गेट another chance to kind of crack that exam so they were all cool and I was cool it was a very happy life going on till
My chacha ji, who used to work for L&T at that time in Delhi, he came in for a visit and he's like, engineering कैसी चल रही है बेटे? मैंने कहा ठीक चल रही है, 2 केटी लगी है. मॉम डैड ने बोला हाँ पर वो तो लगती रहती है. तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लगती रहती है, ऐसे लगनी नहीं चाहिए ये वो. Then they also got very charged की ऐसे कैसे लग गई, नहीं लगनी चाहिए. लगा रहे यार चाचा जी आपने काम खराब कर दिया. But then उसके बाद कभी नहीं लगी. मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हमें बोला जाता था कि अगर केटी लगी मतलब करियर खत्म, और बहुत डर लगता था केटी से. डर लगता था. फिर मेरी यू साइड मैकेनिक्स में लगी ना, मतलब फर्स्ट सेम सेम मेरी भी फर्स्ट सेम में ही लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर. और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहा जाता है, पर हर कोई नहीं कहता, पर कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आके कहते हैं कि यार करियर खत्म अभी. बहुत डर लगता है एट दैट पॉइंट. आई डोंट नो आपको क्या फील हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट थी ऑनेस्टली. मुझे एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये 2 पेपर मेरे खराब गए हैं और ये 2 पेपर में केटी लगनी है. मैं सरप्राइज था कि मैक पे मुझे रिवाल में पास हो गया. मैं लाइन में खड़ा था रिवाल के लिए फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार मैं तेरे लिए लाइन में खड़ा हूँ. कलीना यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रिवाल के लिए. उसने कहा तू लाइन में खड़ा ही है, अपने भी पेपर डाल ही देना, तुझे पता है तू फेल है पर डाल दे, हो जाएगा. Then in the next sem, by the time I was actually prepped and ready to give the exam on Mac, last moment I got a news that रिवाल में मैं Mac में पास हो गया हूँ. So I was like चलो यार ठीक है, वो भी अच्छा है. मैं थोड़ा ये सिस्टम समझा देता हूँ because you and me are talking with understanding of familiarity. ये सिस्टम ये है कि आपके 6 पेपर होते हैं फर्स्ट सेम में, उसमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में केटी लगती है तो फिर सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट्स के साथ 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ते हैं उन एग्जाम्स के बीच. और वो चैलेंज होता है. And you get 5 chances. Total 5 chances. The 5th chance is called the golden KT. कि अगर इसके बाद अगर आपको फिर भी केटी लगी, then you get a year drop. हाँ, इससे लोग डरते थे बहुत ज्यादा यार. ईयर ड्रॉप तो बहुत बड़ी बात है. किसी को मिला? हाँ मेरे ग्रुप में मिल चुका है. Really? अब क्या कर रहे हो लाइफ में? दे आर इन बॉस्टन डूइंग लाइफ में तोड़ रहे हैं. हाँ तोड़ रहे हैं वो. पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटालिटी बहुत अलग होती है. और वो झेलने वाली मेंटालिटी फॉर्म हो जाती है कि ठीक है ये भी झेल लेंगे. प्रेशर बहुत होता है. इसलिए शायद इंजीनियर्स करियर को स्विच करके किसी भी फील्ड में छा जाते हैं. बट मैंने ये देखा, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट फॉर अदर फील्ड्स एज वेल बिकॉज मैंने वो जिया नहीं है, बट इंजीनियरिंग में देयर आर लॉट ऑफ लाइक सप्रेस्ड आर्टिस्ट्स. वो जब भी कल्चरल फेस्ट आता है यू सी लाइक कोई डांस में तोड़ रहा है, कोई skits and plays and painting and like anything, like it's just the cultural festivals of engineering colleges are really top notch. I'm getting goosebumps. Seriously, क्योंकि आप सच बोल रहे हो. सच में होता है यार. It's a very interesting environment, I'll say that. Character development होती है. क्योंकि मैथ्स इतना ज्यादा होता है हर सब्जेक्ट में, तो आपका दिमाग भी थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है. और आई रिमेम्बर कि इंजीनियरिंग के दौरान आई वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि आई डोंट नो हाउ योर प्रोफेसर्स हो, बट मेरे सारे प्रोफेसर्स नहीं, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी थे जिन्होंने अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट दी थी, तो कुछ प्रोफेसर्स बहुत प्रेशर डालते थे. आई डोंट नो यू वेंट थ्रू. आप भी EXTC इंजीनियर हो, व्हिच आई फाइंड आई एम वियर्ड ब्रो. बहुत कम EXTC इंजीनियर्स मिलते हैं. आई नो, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू नो यार, क्योंकि लाइक यू सेड बहुत कम मिलते हैं. मतलब मैकेनिकल से बहुत मिलते हैं, सिविल से बहुत मिलते हैं, कॉम से IT से तो बहुत मिलते हैं, बट EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस यू फाइंड इट लाइक एक बहुत रेयर ब्रीड है ये. जो मिलेनियल्स के टाइम में कूल फील्ड होती थी. आई डोंट नो अगर अब कूल फील्ड है कि नहीं. इवन आई डोंट नो यार. बट एनीवे EXTC इज सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट. EDC याद है आपको? BJTs, FETs. पर मुझे एक्चुअली आई डिडंट माइंड EXTC एट ऑल बिकॉज मुझे वो सर्किट्स वगैरह एवरीथिंग आई वाज लाइक इट डिडंट लाइक, मैं डरता नहीं था उनसे. जब अगर पढ़ने बैठूं शिद्दत से तो मुझे समझ में आती थी बातें, तो आई वाज नॉट वेरी स्कैर्ड. मैं आम जनता को समझाऊंगा जो ये कहना कि ये समझते थे अच्छे से, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया. सर्किट्स कैसे चलते हैं. जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट होता है ना स्कूल में, उसका एक बहुत हाई लेवल सब्जेक्ट है ये, जिसमें मुझे KT में दी थी. PW ना. हाँ, PW I had gotten 89 on 100. Really? PW I had scored. Okay. फिर से आम जनता के उनका फिजिक्स ओरिएंटेड दिमाग बहुत अलग है. अगर उन्हें PW समझ आई, मतलब ये बहुत कुछ विजुअलाइज कर पाते हैं. That's what BW is. Yeah, it's remembering a lot of formula and visualizing. Yeah, that's why you're a good actor. I don't know, maybe. Okay. Wow, I'm loving talking about BW to you. Okay. I didn't think I'm going to come here and talk about BW so much. I'm also actually enjoying it. मैं बहुत सालों बाद BW, CP, mechanics ये सब बात कर रहा हूँ. Same. मुझे याद है जब YouTube की शुरुआत हुई थी भाई, and please chip in to give your film world experience also.
YouTube की शुरुआत कैमरे के साथ होती है. Correct. बेसिकली आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ता है. Yeah. एंड देन आई हैड अ फ्रेंड एक्सप्लेन स्टफ टू मी, बट झट से सीख गया. एंड तब मुझे पता चला कि यार ये शायद इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से हो रहा है. हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है टू लर्न थिंग्स yeah, फास्ट. yeah. एंड दैट सेम थिंग आई हैव अप्लाइड इन बिजनेस. आई हैव अप्लाइड एट एज 30. जो पॉडकास्टिंग भी बहुत झट से सीख गया. आई डोंट नो अगर आपको भी फिल्मी दुनिया में यही फील होता है. एंड ये एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था बहुत देर से. दिस इज व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. You're one of the legends of engineering colleges in Mumbai. तो engineering apply हो रही है अभी लाइफ में? यार एक्चुअली पता है, आई एम श्योर हो रही है, पर जो पहलू हो रही है, I'll say in a very like a not exactly like a philosophical way, but I would say कि जैसे ना, I'll give you my dad's example. वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े and he wanted to become an English professor. MA in English literature, BA in English literature वगैरह वगैरह की है. And he became an action director in films in Mumbai. Long journey, blah blah blah. But I always used to ask him कि यार वो कहाँ गई, वो कुछ help किया था या नहीं. And in college only I had decided in my third year actually कि मुझे acting करनी है, acting है lifelong. I'm not going to pursue post grad because at that time all my friends were like यार इसके बाद MS करना है. GRE का एग्जाम की प्रेप चल रही थी, which is the requirement if you want to give that exam and do post grad outside India. और जब आपके सारे फ्रेंड्स वो कर रहे होते हैं ना, it takes a lot mentally to not do it. A lot, really a lot. Because तो तब I used to ask him कि यार आगे जाके ये तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत डिसीजन हो गया, क्या हो गया. So he used to tell me कि यार जो भी करेगा तो ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा. ग्रेजुएशन बट यू हैव टू डू इट पूरी मेहनत से, बिकॉज ये फॉर्मूला शायद काम ना है, बट जिस मेहनत से तू कर रहा है ना, वो मेहनत काम आएगी. वो आदत जो तब लगती है ना उस उम्र में कि यार यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट. जो भी है, रगड़ाने की जो आदत लगती है ना, वो रगड़ाना जो है ना, वो काम आता है. क्योंकि वहां अगर आपने कंप्लेसेंसी दिखा दी कि ये करना तो है नहीं, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, बट मुझे वो जेन्युइनली काम आया कि वहां पे those 4 years, even when I knew that this is not what I'm going to pursue, but at that time building relationships, camaraderie with your friends, giving everything to those subjects and those exams and whatever that was, cultural festivals, everything that those 4 years had to offer to me, I gave it my all. And that habit of giving it my all is still relevant when I have to, like, because everything I do is a project I take up, a role is a project I take up, and okay, this is my project जहाँ पे मुझे केटी नहीं लग सकती, you know, because I won't get another chance इसमें. So every film, every role is a golden केटी. So वो शायद अभी हेल्प हो रही है. तो जो आपने कहा ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, मुझे याद है जब पहली बार केटी दिखी थी स्क्रीन पे, हम कंप्यूटर पे चेक करते थे हमारे रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर में. जब केटी दिखती थी स्क्रीन पे बहुत पेन होता था. हमारे टाइम पे तो लगता था वो शीट लगते थे. वो सेकंड थर्ड ईयर में हुआ. हाँ, अच्छा. आई डोंट नो, ओके, मे बी देयर वाज अ डिफरेंस, बट डर लगता था जब आप शीट चेक कर रहे थे ना ऑन द वॉल. बहुत डर लगता था केटी लगी है कि नहीं. एंड मुझे याद है आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम विद द फियर आई फेल्ट while checking the previous sems results. मतलब I don't want to put myself in a position to have that level of fear in my heart, इसलिए I'll do that extra मेहनत right now. एंड जो आप कह रहे हो ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, ये जो एक ऑनेस्टली आई फील कि डर मेरा मोटिवेशन रहा है लाइफ में भी कि आई डोंट एवर want to not be able to bet on my abilities. Right. No, I feel always that वो जो little fear element होता है, डर होता है ना, that always brings the best out of you if you treat it as a motivational factor. If you're going to be really like indulging in that in a way that कि यार तुम्हें लग रहा है कि यार it breaks your confidence, it has to be a stepping stone. अगर वो stepping stone आप बना दो तो that's actually a very good advantage you have. You know, that insecurity that डर provides you, that I feel is a great stepping stone for you to achieve something which you feel you might not be able to. Bro, you're very easy to talk to. Engineering, bro. ये क्यों होता है? Because we understand each other's a little bit. I don't know, maybe it's that. Yeah. और वो clarity होती है thinking में. Yeah. But I also want to genuinely tell you, क्योंकि ये show अभी शायद 4 साल पुराना और एक show की बहुत बड़ी थी military रही है. I know. I've seen some snippets of this show where you've invited like some really like experienced people from the armed forces. Yeah. And I think generally the military collectively, I'll be very honest with you. I'm going to be very transparent here.
just let me finish the full thing that I'm saying. तो बहुत सारे military generals they used to get pissed off with military based films क्योंकि they used to feel कि it's not accurate. पर हर कोई सैम मानेक शो की फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो लिटरली इंडियन मिलिट्री के सबसे बड़े लेजेंड है. एंड जब मैंने पहली बार सुना कि आप उनका रोल निभा रहे हो, प्लस एक फोटो आई थी बहुत आई थिंक 1-2 साल पहले जहाँ यू नो इट्स अ वेरी फेमस फोटो. आई वाज वेरी हैप्पी, लाइक आई लिटरली क्लैप्ड व्हेन आई सॉ दैट कि ये फिल्म बन रही है. एंड आई नो दैट दैट्स हाउ at least the military audiences are looking at the film. So just know that it's already a great thing. बस ये बोलना चाहता हूँ. While I know that the military is थोड़ा hesitant about it, but generally everyone is very excited. No, but it's not news for me because जितना मुझे आर्मी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है when I was doing Uri or now when I'm doing Sam Bahadur and that film is coming out, I actually had a lot of like heart-to-heart conversations with them and what they think of cinema and what they think of Hindi films में depiction कैसे होती है and everything. And of course, like they have also said this कि यार कि कई बार ऐसा होता है, कई बार हम समझते भी हैं कि कुछ liberties लेनी पड़ती हैं, कई बार कुछ ज़्यादा line cross हो जाती है कि यार ये ऐसे थोड़ा ना हो सकता है. So, but like एक जो surface level पे I've seen like them being very sensitive about the uniforms, the medals, the badges and everything. तो वो क्योंकि and I realized because उस जब जितनी मेरी ट्रेनिंग हुई उनके साथ, जितना मैंने वक्त बिताया उनके साथ, कि यार इन्होंने लिटरली डंडे खाए हैं क्योंकि सुबह उनकी जब ड्रिल होती थी उनके यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होते थे. तो उन्होंने लिटरली वो क्या कहते हैं उससे there's a technical army term for that where it's called like it's a punishment that they get and it's a hardcore punishment that they get during their training days. If slightly by even a margin कि आपकी स्त्री खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो they get a punishment. तो जब हम वो ऐसे पहन लेते हैं और medals are fully off and everything, they are bound to feel hurt about that, you know कि यार इतना तो ध्यान रख लो. So हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सैम बहादुर में, and especially मेघना गुलजार, I have to give it to her that she has been like a hawk on set when it came to the color of the uniforms, the details of it, because it's like यार उसके बिना हम ट्रिब्यूट नहीं दे सकते आर्मी को अगर हम यूनिफॉर्म क्रैक नहीं कर सकते. कुछ ऐसे भी मिलिट्री प्रोफेशनल्स आए हैं शो पर जिन्होंने मिलिट्री फिल्म्स को अप्रिशिएट भी किया. I don't know if I'm saying too much here, but I feel कि आप देश के लिए भी कुछ कर रहे हो through this film. No, of course यार, like ये ना not in a preachy way, but I genuinely feel कि जब मुझे ऐसे मौके मिलते हैं where I get to be part of films where it's about the heroes that have existed in our motherland, जो not necessarily हमें पता हो through education, through books or whatever, or maybe they are just like not a detailed study in our history books, but they were just a mere mention. But if we get to study them, it's just nice to know that, you know, people like Sam Manekshaw or Sardar Udham, they've really existed. They were here. And they did something for the country for which जिनके benefits आज तक हम ले रहे हैं. तो अगर मुझे अपने काम के जरिए वो भी जीने का मौका मिले और वो कहानी आगे आज की यूथ को दिखाने का मौका मिले और एक्सपीरियंस कराने का मौका मिले, and if they resonate to it, it's just I just feel somewhere in the corner of my heart I feel good about कि यार through my work I could do something which had a certain deeper meaning to it. I love Sardar Udham. बहुत डार्क फिल्म थी, बहुत I think honest film थी. Like from Sujit Da, like the more I interacted with him, I got to know like how he literally is like a Bhagat Singh fanboy, and it's a story that he's lived with for many years, and I just was so like fortunate कि यार मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला, and through his eyes and his vision, the way he saw the story, I thought there was a lot of purity in which he said that story because he kept telling me यार कि मुझे ये नहीं दिखाना कि उन्होंने क्या क्या किया था. The reason for which I want to make this and why I get inspired by Bhagat Singh ji and Udham Singh ji is because their state of mind is what inspires me. So that is what we kept trying to kind of get. सरदार उधम में कुछ scenes थे जहां आप बहुत dejected acting कर रहे थे. I remember you're sitting like that in one scene. That's the scene that stayed with me. I don't know if you remember what I'm talking about. Which part? Like the younger portion or? नहीं, early portion जहाँ वो यहाँ तो I think जेल से just निकले हैं. It was one of the early portions. Right. And my thought was कि क्या विकी कौशल ने भी इतनी ज्यादा डिजेक्शन देखी है लाइफ में to be able to act with that kind of pain. And plus आपके फिल्मों में ना
बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत अलग रीजंस के लिए कनेक्ट करते हैं, बट अ लॉट ऑफ गाइज कनेक्ट विद यू बिकॉज आप बहुत साइलेंट मेल पेन को अच्छे से डिपिक्ट करते हो. आई डोंट नो इफ यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग. I got what you're saying, but I've never seen, like, obviously I can't objectively see my performances like that. Maybe I'm giving you engineering bro perspective. Don't mind the Sounding good to me. पर एक साइलेंट मैस्कुलिन पेन दिखाई देता है आपके परफॉर्मेंसेस में जिससे ब्रोस कनेक्ट कर पाते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाई यू हैव बोथ अ फीमेल एंड मेल फैन फॉलोइंग ऑनेस्टली. Okay, but I think in Sardar Udham, if I just pick that example out, all that I was thinking were, like, you know, at the later stages when I'm like late 30s, 40, and when I'm like in London and roaming around, the one demarcation, like when I feel ki I'm overthinking a character or I'm making like too many ideas and theories in my head. I like to simplify things, and then I just put like one word, like I just put like one block idea. So I remember during Sardar Udham, because it was such a silent kind of a portrayal with not many dialogues. The first 20 minutes of the film, you don't even hear him talk. So I just said ki yaar, jab tak he's not done what he's wanting to do, imagine like there's a weight of 2,000 kilos on your shoulder. You're carrying a lot of weight. And I said, ki, let me just start with just literally feeling a physical weight. I know it's more like a mental weight, but let me just do everything where I feel like a physical weight on me. And when I play the 19-year-old, just get that weight off. That's how I kind of just in my head just simplified in terms of कि अच्छा यार ये दो लोगों में एक broad क्या फर्क है. And that's where it started from in a physical form, and then obviously in the mental form, men in general are conditioned to kind of suppress feelings and like कि ठीक है यार होता है ठीक है बस चल रहा है भाई. you know. हाँ, so वो एक पता नहीं वो शायद वैसा भी है, but I don't know, I can't dig deep in that कि because how it lands on a viewer is very subjective, you know? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि YouTube को चलाने के लिए हमें डेटा को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है. Yeah, sure. कि who should we get next on the show, what subject should we talk about next. I'm assuming it's something similar. I know it's something similar in the film world. मतलब एक concept को create करने से पहले thought, of course thoughts जाते हैं. Yeah. मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरा सवाल नहीं, मेरा इनपुट ये कि एटलीस्ट आई एम नोटिसिंग जेन ज़ीज मिलेनियल्स भी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आजकल. दे फील कि वी शुड हैव बीन टॉट इवन मोर अबाउट इंडियाज हिस्ट्री. शायद इसलिए I feel कि automatically maybe the film world might go on a bit of a historical tangent. Maybe audience का demand है. That's why we've gone on a full historical tangent. Usually what happens is, at least I don't know what the textbooks are saying today. I don't know how they are like syllabus wise, but जो मुझे याद है, जो हमें पढ़ाया गया था, जितना याद है, इसकी यार हमें से बता like I said कि वो फर्क होता है कि क्या हुआ in terms of incidents, just to cover a wider, because history यार एक टेक्स्ट बुक में भी खत्म करना बहुत मुश्किल है. पर हम स्कूल में इट्स मोर कि यार एनेक्डोटल कि यार ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था. But like the thing that hit me the most when we were shooting Sardar Udham was कि यार जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसमें इतने लोग मरे, और वो हमें सवाल पूछा एग्जाम में, हमने लिख दिया, but we didn't really feel it. We don't know what it really feels to lose that many lives on a single plot of land in one night. So वो उसका impact realize कराना is true kind of understanding of history. Also the way that scene was shot. Yeah. बहुत कुछ फील होता है आपको एज एन इंडियन जो आप वो सीन देख रहे हो. It's probably one of the most difficult scenes to watch that I've ever watched in my life. It was probably the most difficult scene to perform as well. It was because पूरे करियर में. Yeah. पूरे करियर में. Yeah. बताओ. It was यार. It was because of course I was prepared for a few things, but there were certain things which I was not prepared for on a deeper level, because जो हमने वो sequence पूरा shoot किया वो तकरीबन like doing it for like 20 days, and एक चीज जो मुझे पहले ही warn की थी सुजीत दा ने वो कि यार dummy bodies नहीं होंगे, it will be real bodies, and मैं तुझे छोड़ दूंगा. Like there was a 3-camera setup, out of which 1 camera I never knew where it was. Out of the 2 cameras, like they would light the whole ground, and then there was no like
कि अच्छा यार next shot we have this much time so you rest it out or whatever. Once we are on the ground and then it's just like changing angles and whatever. मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा Yeah. जिन लोगों ने वो सीन नहीं देखी. जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिपिक्ट किया गया quite graphically in that film, and I think it's actually the highlight of that film, the way that they've done justice to that incident. And the second aspect is what you're talking about right now, जहाँ सरदार उद्धम का कैरेक्टर वहाँ पहुँचता है इंसिडेंट के बाद और बॉडीज को उठाता है जलियांवाला बाग से, बच्चों की बॉडीज को उठाता है, and that whole stretch is very very intense to watch as a viewer. Yeah. Please continue, bye. So when we started shooting, obviously ये बताया गया था कि जैसे मैंने कहा कि there won't be any dummy bodies, there'll be real bodies, and I don't want you to rehearse how to pick them up. I want to see a 19-year-old not knowing how to pick them up, so struggling how to pick them up and then getting tired and whatever. So we kept shooting, like I said, for like 20 nights where there was the ground, then taking to the hospital, the streets, the houses, everything put together. The night was divided into 6 stages because there was a lot of blood coming on me and everything. So in terms of like technicality wise, continuity had to be maintained and all of that. But let's just say A, B, C, D, E, F, whatever. So wo stages mein, like we kept shooting, and in fact, all the people who were lying down there, they were also told ki I can come and pick up anybody. So you have to lie down, and only brief that was given to me was you genuinely search for people कि कोई जिंदा है. अगर कोई हिलता हुआ देखा, consider them injured and you would try to save them. That was the brief given to me, and the camera will follow you. Don't worry about anything. And it became like a stage for me. And what I was not prepared for after doing it like many times was that somewhere in the middle it just hit me that there was a boy actually doing that one night. And that hit me very strongly. Like I could not sleep after going back home. And I would sit with Sujita also, and I would be like, "Sir, मुझे नींद नहीं आ रही." And he's like, "I understand that, but you know, but we kept doing that. We kept doing that because we felt कि यार कुछ तो सही हो रहा है अगर हमें ये feel हो रहा है." And everybody, like that night, like over there, we shot in Amritsar, and the people were very cooperative. पूरी रात ठंड में वो लेटे रहते थे because they knew what we were trying to recreate. So they were very supportive, and it took a lot of team effort. But just as an actor, it was like it just grounded me a lot. Like I thought that happened with me when I was shooting Masan and prepping for Masan, when I would spend time at the ghat, Masan ghat, and see dead bodies getting burnt. But this was a little, I don't know, strangely deeper than that. And deeper? Yeah. Because there was agony, there was pain, there was trauma, there was, and I had to do that all feeling like a child, because in the film also you see him like before that incident not really being very like revoltish about freedom or whatever. He was just a kid living his life, and but that night changed Sardar Udham Singh ji, and that night, kind of the depiction of that night kind of just like made me realize कि यार अगर हम ये कहें कि जाने गई थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो उसका एक जो इम्पैक्ट मुझे बहुत, मतलब शायद ही पहली बार उस डीपर सेंस में फील हुआ था कि उसका मतलब क्या होता है. बहुत straightforward चीज कहना चाहूँगा. I feel कि you're a very blessed man to be able to play such characters. I agree. I feel that so. I feel that really. सोचा इसके बारे में कभी, क्योंकि seeing your career from the outside, उरी, सरदार उद्धम और सैम बहादुर, just in 3 films की वजह से I feel कि you're in many ways a chosen one. I'm genuinely saying what it feels like from the outside. शायद इसलिए people are rallying behind you also. I don't know, but I do feel blessed to get these opportunities because they are, like we've discussed engineering days. Engineering जब छोड़ी थी, actor बनना था. 2009 I'm like, okay, let me just do an acting course, and that too was like, I had said कि यार मुझे actor बनना है, but मेरे अंदर भी confidence नहीं था, to be very honest, because that time was also not the time like we have today where actors, even if you do a film,
एंड इफ योर वर्क इज गुड यू विल बी लाइक देयर विल बी क्यूरियोसिटी अराउंड यू कि यार ये कौन सा नया एक्टर आया. वो टाइम वो दौर ही नहीं था, यू नो, वो बहुत ही हीरो वाला दौर था, लॉन्च होने वाला दौर था, व्हाटएवर. तो तब मुझे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था. बट उस जर्नी से जब स्टार्ट करके देन यू स्ट्रगल एंड देन यू गिव ऑडिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, थिएटर एंड एवरीथिंग. उसके बाद जब आज देखते हो कि हाँ यार तुम्हें ऐसे रोल मिल रहे हैं और ऐसे डायरेक्टर्स आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एंड फॉर दीज लेजेंडरी रोल्स एंड कैरेक्टर्स, it really feels like a blessing. because यार ये सरदार उधम सिंह जी हो चाहे सैम बहादुर हो, मैंने इनकी कहानियां घर पे हमने सुनी है यार, हमने डिस्कस की है, और फिर वो रियलाइज नहीं होता कि यार आज मुझे वो मौका मिला है उनकी जिंदगी को समझने का और फिर लोगों तक वो कहानी पहुंचाने का एज दैट गाय. वो रेट्रोस्पेक्ट में हिट होता है कई कई बार, पर वो जब हिट होता है तो बड़ा स्ट्रांगली हिट होता है, एंड यू फील लाइक यू देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू फील कि यार जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, God is really taking care of you. यूनिवर्स, किस्मत, गॉड, ऐसी चीजों की बातें बहुत होती है शो पर. एंड मैंने जाना है जो मेगा सक्सेसफुल लोग होते हैं, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. डू यू एग्री? ऑफ कोर्स देयर इज हार्ड वर्क, वो बेसिस है, वो कांस्टेंट है. हाँ नहीं, I'm a strong, very strong believer in destiny and karma. I'm a super strong believer in that. Like, and it's like immovable. Like at times when especially at times when I don't get what I really want to, I really have now learned to take it as a blessing, because I literally have now when I look back and I feel कि यार वो फिल्म नहीं मिली थी यार जो करना चाह रहा था, जो होने वाली थी. But then now I see and I'm like, thank God नहीं हुआ था यार, you know, कि उसके बदले ये सब था. So now I am really like, I know that if your hard work is there, आपकी नीयत साफ है, सच्चाई से काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा. और कई बार आपको समझ नहीं होती कि आपके लिए क्या अच्छा है इस वक्त. बट I just live with that faith that there is a stronger entity or force or whatever taking care of you. Okay. यही सवाल पूछने थे आपसे बहुत टाइम से. लाइक यू वर वन ऑफ द पीपल आई वांटेड ऑन द शो फॉर वेरी लॉन्ग. शायद इंजीनियरिंग कॉलेज कनेक्ट की वजह से, एक्चुअली मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट, आल्सो बिकॉज ऑफ योर करियर, बट आई न्यू हाउ आई बी एबल टू टॉक टू यू. आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ द शो आप जान चुके होंगे कि मेरी इंटेंशन क्या है इस पॉडकास्ट के साथ. आई एम ट्राइंग टू गेट टू लर्न व्हाट्स मेड यू. Okay. एट दिस पॉइंट अभी एक राउंड आने वाला शो पे जहां मैं आपको थोड़े से डीप सवाल पूछूंगा. Okay. साइकोलॉजिकल सवाल है, सो प्लीज टेक योर टाइम विद इट. दिस इज द डर से जीत तक राउंड. ये आपको झट से आंसर बिल्कुल नहीं करना है. Okay. पर टेक योर टाइम. मैं टेंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा आपसे. ओके, विकी कौशल, आपके पापा फिल्मों के लीडिंग एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं. पापा ने डर के बारे में क्या सिखाया आपको, या हिम्मत के बारे में? See, the thing is, he has instilled this faith in me of not having a safety net. Where what I would be seeing otherwise, कि जब आप engineering, especially जब आप वो field छोड़ते हो, and मेरे पास एक job letter थी, मैंने एक campus interview दिया था, एक job था मेरे पास. TCS? No, it wasn't TCS. It was at that time it was called Patni Computers, but now I think it's Capgemini. Oh, Yeah, okay. they've taken it over. But तब he said कि यार अगर तू यहाँ आ रहा है ना, उसे फाड़ दे. Like, know that you don't have a backup. Sometimes that helps, but be the man that gives you the energy. कि यार there is nothing else. There is nothing else. And sometimes that gives you that little edge, that little 1% edge which needs, where it's just that supernatural force that comes into you that कि I have to do it. I don't have anything else. So I think वो मैंने जो सीखा is that हिम्मत coming from not having a safety net. प्लान भी होना ही नहीं चाहिए. That helps me. Same. Personally, like I said, it's all subjective. It's all very, very subjective depending on your conditions and where you are, what you're doing, your state of mind and everything. But that not having a safety net always makes me do something that I feel I don't have it in me. Whereas when I have that safety net, I feel I wouldn't push myself to that extent. आपकी ह्यूमिलिटी की वजह से आप कह रहे हो कि इट अप्लाइज टू यू, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपने भी लाइफ देखी है, आपने अलग अलग लोगों से बात करी है. पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा, एट एज 22 प्लान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ का
एक ही फेज है जहां आप इतनी ज्यादा रिस्क ले सकते हो डर के बारे में ना सोच के. एंड आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू नॉट हैव अ प्लान बी एट 22. आई एग्री. ये मैं अक्सर कह चुका हूँ शो पे, एक बॉल्स टू द वॉल मेंटालिटी हो जाती है कि यार अभी करो या मरो. ओके, विकी कौशल, पूरे करियर में सबसे ज्यादा हिम्मत आपको किस रोल के लिए जुटानी पड़ी? ऑब्वियसली इट्स द कॉन्टेक्स्ट हियर इज मसान एट एज 24 या 25 हुई थी आपकी. तो आई एम ऑल्सो आस्किंग द बॉय विकी कौशल, तब ज्यादा हिम्मत लगी या सैम बहादुर के लिए? Sam Bahadur. Really? It's only because of the man he was. It's not a fictional character. So there's a glory you have to live up to. You can't. You just didn't have even 1 degree of scope to just fool around or miss the mark. Because whenever I would interact with the Indian Army, they would be very encouraging. They would give a lot of love, a lot of faith. But they would always end it with saying, "You better do a good job. He's our best man." So that would always kind of scare me a little bit. So I think जो मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था वो Sam Bahadur. The kind of prep that got involved and every day on set, the constant reminder that just remember whom you're playing. Just remember the man whom you're playing. And yeah, so I would to answer this question, it is definitely Sam Bahadur. ओके, एक टेंजेंशियल सवाल है जो मुझे एक्चुअली पहले पूछना था. जब आप इस स्टैचर वाले कैरेक्टर्स निभाते हो, डू यू फील ऑन सम लेवल देयर लेगेसी और their soul is present on set? I felt that during Sam Bahadur, and I'm so it's so strange you asked me this question because me and Meghna have said this to just each other, not even announcing it to a team. We would just sit on the side and sometimes Meghna would say that, I feel him. And sometimes I would say that, Meghna, I feel him. We really, because this film during the shoot or just the existence of this film till now when it's releasing and everything, so many things that have gone against the film. Just making of the film. So many things. Sometimes location, sometimes logistics, sometimes this, sometimes that. Everything that we ended up doing in the way we ended up doing was just the best thing that could have happened to the film. And every time something like this would happen, we would feel ki yaar, we were not aiming for this. We actually had a different plan. But we ended up doing what was literally the best thing for the film. And from the smallest to the biggest things. But every time you would be like, Meghna, Sam is here. So we would feel that many times, and I genuinely feel that very deeply, yaar hai, he's watching it. लाइफ के इस मोड़ पर अब आपको किस बात का डर लगता है? अब इस बात का डर लगता है कि कहीं मैं कोई भी चीज रिगार्डिंग माय वर्क और एनीथिंग और रिलेशनशिप और एनीथिंग किसी चीज को ग्रांटेड ना लूं. बिकॉज नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक थिंग्स ग्रांटेड. पहले नहीं थी. पहले वो था ही नहीं आपके पास कि आप उसे ग्रांटेड लो, क्योंकि है ही नहीं आपके पास. और जब आपके पास वो आ जाती है चीजें, स्पेशली पहले काम नहीं था तो काम चाहिए, और आप ग्रांटेड किसको लोगे? काम मिलने लगा, पर वो मिलने लगा ऑडिशंस दे दे के. फिर ऐसा नहीं था कि आपके पास 10 स्क्रिप्ट आ रही है और आप चूज कर रहे हो. अब बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन दैट पोजीशन कि आपके पास स्क्रिप्टें आ रही, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू डोंट वांट टू डू. This is the time when you don't want to take things for granted, and I think you start slipping, and because you don't fall, you start slipping when you take things for granted, and before you realize it's a little late. So this is the phase where my biggest fear is that anything that is, because you have a team working with you, anything that you would want to kind of prep for a role or do something, or it's there, it's available, everything is available right now. So when things are available is when you start taking the basics for granted. So abhi dar wo rehta hai back of the mind when you're hitting the bed at the end of the day. You just have to be prepared ki yaar granted mat lo. Keep that hunger alive. Yeah, that's Rocky 3 देखी है आपने? Yeah, hunger मर जाता है उसका. Correct, exactly is that. Then he has to kind of start from scratch. So yeah, that. रॉकी के 5 पार्ट्स एट वन बार, अभी बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं, बट ओरिजिनली 5 पार्ट्स थे. फॉर मी 3 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक बार आप चैंपियन बन गए तो चैंपियनशिप बेल्ट खोनी नहीं है. इट्स दैट लाइक दे से ना कि वो चैंपियन बनना इज इजियर देन चैंपियन रहना.
so it's that shift जब हो रहा होता है, that transition is where you start taking things for granted. It's when every day at work or every day at wherever you are, whatever you do is the first day at job, is when you'll be like, हाँ ठीक है यार, करना है. अब बेसिकली फिर से ह्यूमिलिटी की बातें कर रहा हूँ यहाँ, एंड आई फील कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है एट द स्टेज यू आर एट. और ये भी मैंने शो से सीखा है, मैं खुद का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ. माय जॉब इज टू ऑब्जर्व यू गाइस. मोस्टली हर कोई ह्यूमिलिटी को लेकर थोड़ा सा डरता है कि लाइक आई डोंट वांट माय ह्यूमिलिटी टू फेड अवे. नो, एंड आई आल्सो फील कि लोग आपसे इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं. पर लोगों ने आज जाना है कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट हो, आप नेक फेल हो, ह्यूमिलिटी कभी जाएगी नहीं. I guess. So विकी कौशल, यही था डर से जीत तक का राउंड, बट आई गॉट टू नो यू मोर. अभी मैं थोड़ा सा और आइस ब्रेक करना चाहूंगा. Okay. ओके, जब मैं आपसे बाहर मिला, मुझे पता रहता कि मेरे गेस्ट कौन सी वाइब ला रहे हैं मेरे घर. आपसे एक बहुत इंटेंस एनर्जी फील होती है. यू आर वेरी इंटेंस गाय. नाउ यू आर नॉट. क्या बात कर रहे हो? नहीं, मतलब एनर्जी स्पीक्स बिफोर पर्सन स्पीक्स आल्सो, नॉट जस्ट द बियर्ड. पर आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे थे. इसी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स की वजह से आपको सक्सेस मिला कि आपने इंजीनियर किया अपनी लाइफ को. दैट्स व्हाट आई फील. I can never actually decode why I have gotten success, because sometimes I feel it's also, sure, it's your hard work, it's what you've put into the job, and you have to give in that much to get out of it. ये वो, but मुझे बहुत लगता है कि बहुत किस्मत भी होता है, बहुत लोगों की दुआएं भी होती हैं, अपब्रिंगिंग भी होती है. कुछ मतलब I don't know. It's just like I feel. When you say success, my success, it's got to, of course, it's got to do with me, but it's got a lot to do with the people who put faith in me, people who put kind of like, I don't know. मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का भी एक effort होता है. It's always a team thing that कभी भी वो मेरी success नहीं हो सकती. मुझे वो कभी भी वो जो term होता है self-made man. I don't think you are ever a self-made man. आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते. आपको कई लोगों का सहारा मिला, कई लोगों ने मौके दिए, उनके साथ काम किया, जिसमें आपका काम निखर के आया. स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर. मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूं, you need a lot of good technicians around you, you need a solid script, you need a great director to वो काम निखर के लोगों तक पहुंचे. You need an audience. वो ऑडियंस आपको बनाती है. तो मुझे लगता है वो सक्सेस का, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट सक्सेस, और उसमें आपने मेहनत की है, वो उतना होता है. बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं जो यू कांट टेक लाइक जिसकी ये मेरा है. इट्स गिवन टू यू एंड देन इट्स टेकन फ्रॉम यू आल्सो. ओके, दैट ज्यादा केटी में फील होता था या एक फ्लॉप फिल्म के बाद? फ्लॉप फिल्म मोर देन केटी. क्यों? फ्लॉप फिल्म के बाद कई बार मौके कम मिलते हैं ना. केटी में आपको पता है 5 और है. ये एक्चुअली होता है. नहीं यार, दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि यार जब आप एग्जाम दे रहे हो वो आपकी मेहनत है, सिर्फ आप, और आपको केटी लगी है. जब आप फिल्म करते हो बहुत लोगों की मेहनत है, और वो जब फिल्म नहीं चलती वो सबको इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू विल गेट. उसको बिल्ड करना, उस फेथ को विद द ऑडियंस, वो क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो आप इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल. आपकी चलेगी भी और फ्लॉप भी होगी और सब कुछ होगा और आप सीखोगे भी. बट हाँ, पेनफुल ज्यादा तो फ्लॉप ही होता है यार, बिकॉज वो बहुत मेहनत जाती है यार. इट्स मतलब और बहुत लोगों की मेहनत जाती है साथ में. एंड इट्स अ लिटिल ऑल्सो व्हाट हर्ट्स यू इज दैट कि यार एक प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए थे, एंड वो पैसे वापस, मतलब इट वाजंट अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर ऑल्सो, व्हिच यू वुड ऑलवेज वांट दैट टू हैपन एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म. सो तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है कि अरे यार नहीं चली, नहीं रेजोनेट नहीं कर पाई. मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं अब पूछने वाला हूँ, और ये मेरा एक प्री प्लान सवाल है फॉर दिस होल पॉडकास्ट. फिर से थोड़ा सा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड सवाल है. जिस तरह से मैं हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग की बातें करता हूँ, द एबिलिटी टू रिवर्स इंजीनियर इज माय बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज.
मतलब आपको चाहिए ये, अभी आपको पता नहीं ये कैसे मिलेगा आपको, फिर से रिवर्स इंजीनियर कर दो और आप फिर आपका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, और एक गेम प्लान ड्रॉ आउट करते हैं। करेक्ट। कूडोस टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो तुमने फ्लो चार्ट बनाया है ना, इसकी आदत इंजीनियरिंग नहीं डाली है। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, फ्लो चार्ट। ओके, these are coding nightmares. नाइटमेयर, सीरियसली नाइटमेयर। Anyway, तो ये जो फ्लो चार्ट होता है एक फिल्म इंडस्ट्री के करियर को लेकर, आई वोंट जैसे फिल्म इंडस्ट्री का करियर, एक हीरो के करियर को लेकर ये फ्लो चार्ट क्या है, क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था मुझे लगा हाँ मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड देन शायद आई स्टार्ट अ बिजनेस। फिर मुझे पता भी नहीं था कि PR जैसी चीज होती है, स्टाइलिंग जैसी चीज होती है, ये सब रैंडम फैक्टर्स, फोटोशूट्स होता है। आई एम श्योर यू हैड सम काइंड ऑफ अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन मीडिया जनरली। क्या अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, वो A to Z समझाइए। वाओ, ये तो पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, काफी चीजें थी यार। टेक 20 minutes 30 minutes of the answer if you want. यार पहली बात तो ये है कि जैसे 2009 में इंजीनियरिंग हो गई, पास आउट हो गए, डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब ये है कि एक्टर बनना है। करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वाज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, I was a happier person. I was not cribbing. I was not feeling Monday blues. I was not feeling कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है. I was like, okay, this is what I can do for the rest of my life. Now let's keep evolving in this. One thing I had given कि यार time दूंगा मैं, and that is something I would say not an advantage not many people have. मैं बम्बई का ही लड़का हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे है, मुझे रेंट नहीं देना, सब कुछ, तो मैंने कहा let me make this as an advantage rather than just कि यार take it for granted. So I was like ठीक है, तो what advantage can I get? Give myself time. मैंने कहा कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कैमरा के सामने आने की, अगर वो क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं होता वहां, लाइक वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स नाउ, केटी नहीं है। जज किया स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगर कि यार इसको काम नहीं आता तो दूसरा काम मिलना पहला काम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा टाइम लो। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर। असिस्ट किया, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि बहुत कुछ सीखा। इट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, बहुत कुछ सीखा। बट देन व्हाट मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर मी इन द सर्कल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाज कि सारे मुझे AD की तरह देखने लग गया कि ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये। एंड यूजुअली द असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु वांट टू बी एक्टर्स, उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, हाँ ठीक है, क्यूट वैसे देखते हैं। बट वो और मुश्किल हो जाता है कि अब प्रूव करना है कि नहीं यार आई एक्चुअली वांट टू एक्ट एंड आई लाइक यू नो टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर। So I broke away from that कि I was getting more opportunities to assist। मैंने कहा यार हाथ जोड़ के नहीं यार ये मैं और करूंगा, मैं इसी में चला जाऊंगा, and I don't want to be a director, I want to be an actor। मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है। Then I started doing theatre। अब वो करना शुरू किया, उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया। लेकिन वो कौन सी दुकान है जहां पे ये जा रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये न्यूज की ऑडिशन है, आ जाओ। ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके। अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, ओशियार में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ। पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है, तो खड़े हो जाओ लाइन में। पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछता था तुम्हें पता कैसे चला। मैं तो बाय चांस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि अच्छा ये चल रहा है। देन दे सेड कि नहीं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा अच्छा ये पहले तो ऐसा होता है। फिर वो ऑडिशंस में ये था कि आपको फिट भी होना होता है ऑडिशन के लिए। आई डोंट मीन फिजिकली फिट, कि पहला एक प्रोसेस होता है बिफोर यू क्रैक द ऑडिशन, यू हैव टू क्रैक गेटिंग इनटू दैट रूम फुल ऑफ पीपल फॉर दैट ऑडिशन। कि पहले नॉक करके मेरी ये सवाल, मतलब मैं सपने में भी पूछ सकता था, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन। ये अब ऐसा हो गया था कि ये जपता था मैं। ये नॉक किया, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन, यस, लिस्ट पे नाम लिख दो, 2 घंटे बाद नंबर आएगा। एम आई फिट फॉर द ऑडिशन, नहीं, अगला कहाँ है ढूंढो। तो ये पहले तो ये पता लगा कि काम, मतलब वो कई बार ऐसा होता था जेन्युइनली कि ऑडिशन आज मैं कर दिया तो मुझे लगता था फिल्म मिल गई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, पर आज ऑडिशन हो गया यार। तो वो पहला मेरा एक बबल टूटा कि भाई, क्योंकि एक्टिंग स्कूल में क्या होता है कि 20 लोगों का बैच है, उसमें आप बहुत कमालते, आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होंगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसको काम देंगे।
वो पहले तो बबल बर्स्ट होता है आपका कि आप 20 लोगों में अच्छे हो, बाहर 20 लाख लोग वही काम ढूंढ रहे हैं। तो एक्टिंग स्कूल से सिर्फ आपका आपका क्राफ्ट पॉलिश होता है? क्राफ्ट पॉलिश भी नहीं होता। आई वुड से कि एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू एक्टिंग स्कूल्स एंड इट वाज अ ग्रेट एक्टिंग स्कूल, बट मुझे ये था कि इट्स व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट। दे जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स एंड दे probably give you the confidence कि you have it in you, go for it, you know. But it's a whole world of, it's like a Pandora box of skill set that you have to learn probably on the job also. But they just give you they just open the pores कि यार ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, फिर आप शायद एक होलसम एक्टर बन सकते हो। और वो रोज आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला तो ये था कि ऑडिशन पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन क्रैक करना, उसे फिर मिलना नहीं मिलना, काम पे टॉप 3 में जाके, टॉप 2 में जाके आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तब मुझे लगता था कि यार यहाँ, और उस समय मतलब एड में कितने मिलते थे, 10,000 पर डे, 15,000 पर डे। तो मुझे लगता था यार 10,000 की नौकरी मिलने में मेरे को मतलब सीरियसली पसीने छूट रहे हैं कहाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के नो, वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान भी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर में आपका अंदर का जो एक्टर है बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि रोज आप वो कर रहे हो व्हाट यू लव डूइंग, पर आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं। मुझे याद है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं मतलब पहली कमाई थी मेरी, उसमें मुझे 2,000 रुपए मिले थे। और मेरे को ऐसा था कि ये क्या मिल गया मुझे आज 2,000, जबकि मैं मतलब लाखों की नौकरी छोड़ के आया था, पर 2,000 मुझे ऐसा लग रहे थे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो ये सारी चीजें ना नई नई मुझे समझ में आ रही थी। बट चलो, वील स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, कि मतलब मौके मिलने लग गए। तो जब मौका मिला और सब कुछ हुआ, तो तब ऑब्वियसली दीज द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड कि यार स्टाइलिंग और पीआर, जैसे फॉर द फर्स्ट 6 months व्हेन मसान केम आउट, आई डिड नॉट हैव अ मैनेजर। मसान आपने कैसे क्रैक करी ऐसे ही? सो नहीं, मैंने एक्चुअली जो पहली फिल्म शूट की थी, जो मुझे जेन्युइनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन जो पहला लीड रोल मुझे मिला था, वो जुबान। मोजेस सिंह वाज द डायरेक्टर। It was his first film. It was my first film, and literally he selected after auditioning me, and that was the first film I shot in 2013. But that film came on late, like after Masan, in 2016. Masan was 2015. So 2016 में आई, obviously नई फिल्म थी, कोई किसी को नहीं जानता था, फिल्म नहीं चली, किसी को पता भी नहीं लगा, but it was like वो बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी मेरे लिए, because that was like the first thing I cracked with the audition कि यार select हो गया। पर मसान, how I got it was कि नीरज and me, we both ADs on Gangs of Wasseypur. और फिर he wanted to become a director, I wanted to become an actor, so we were like, okay, अपनी जर्नी पे करते हैं। But then no, he was actually making this film with another set of actors fully, and he was fully prepped for it. तो हम actually मिले थे काफी महीनों बाद, and he like, hey, what's happening, क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। So I said कि यार अभी मैं ये फिल्म शूट करके आया हूँ, अब अगला काम ढूंढ रहा हूँ। एंड he's like, यार मैं ये फिल्म शूट करने वाला हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ, दिस इज द कास्ट। लाइक ग्रेट यार ये वो। फिर मुझे फोन आया मुकेश चावड़ा का कि यार वी आर कास्टिंग फॉर दैट फिल्म। तो मैंने कहा यार, वहां तो मुझे नीरज से मेरी बात हुई थी, शोड मी द फुल डॉकेट कि यार दिस इज द कास्ट एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट रोल। सो इज लाइक नहीं यार वो कास्ट अभी हट गई है, एंड नाउ देयर इज अ वैकेंसी, सो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। So I went in and we did 2 scenes as an audition. एक तो there was a cafeteria scene between me and Shweta Tripathi, and the other scene was ये दुख का खत्म नहीं होता। I did those 2 scenes और फिर हफ्ते भर तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना कास्टिंग से, ना नीरज से, अनुराग सर से, was the producer, nobody called. So मैंने कहा शायद यार नहीं हो रहा, and I was used to not getting a revert after an audition. मैंने कहा शायद नहीं हो रहा होगा। But then a week later, नीरज ने फोन किया रात को 10:30 बजे, sitting with my family home, and फिर पहले 10 मिनट he's not even like mentioning the audition, like it never happens. So मुझे लगा शायद it's like, you know, it's a friend who's like kind of, he's gonna reach कि अच्छा यार by the way यार that's not working, but you know. But then actually 10-15 minutes बाद he is like, अच्छा by the way यार तू फिल्म कर रहा है। And I'm like what? He's like हाँ, we were just waiting because like, you know, there are 6 producers, everybody had to see, there's a French producer, so the audition tape went to France and blah blah blah, the whole process. So I was like, oh okay. Then I started getting calls from like Anurag sir and Guneet Monga and everybody. Hey, we were just waiting for Neeraj to call you and give you the news, but da da da.
So that's how I got Masan. Okay, back to the flow chart. Yeah. So यार काफी चीजें like जैसे पर मसान से ये हो गया था कि इंडस्ट्री ने फिल्म देखी थी, तब वो लोगों ने इतनी नहीं देखी थी, वो आज देख रहे हैं कभी ओटीटी पे कभी कहीं, पर इंडस्ट्री ने देखी थी तो बहुत, जैसे स्क्रीनिंग्स होती हैं और इंटरव्यूज होते हैं, ये सब नए थे, क्या बात करनी होती है क्या नहीं बात करनी होती है, ये सब कुछ पता ही नहीं था. लाइक रिचा वॉज द एक्सपीरियंस्ड वन, you know. So or because Richa was also an actor in Gangs of Wasseypur, so there was this that senior वाला ये ना, क्योंकि मैं तो एडी था तो वासेपुर में, तो मैं वही था कि रिचा मैं तेरा ही हाथ पकड़ूंगा, तो चलते रहना साथ में, मुझे समझाते रहना. सो शी वॉज वेरी स्वीट. बट तो हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे, और मसान भी यार बहुत ही कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह बनी थी फिल्म. बिल्कुल पैसे नहीं थे, ऐसे ही शूट करते थे. आई रिमेम्बर एक दिन स्टडी कैम था हमारे पास, तो हमको लगा था अवतार बना रहे हैं हम, मतलब वो पता नहीं कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, आज स्टडी कैम है, तो हमने डिसाइड किया था आज बैठ के कोई एक्टिंग नहीं करेगा, आज सब चलेंगे, आज चलते चलते एक्टिंग करेंगे. तो बहुत ही अलग वाइब था, हमें नहीं पता था रिलीज भी होगी नहीं होगी, डीवीडी फिल्म बन जाएगी, कुछ नहीं पता था. तो मसान हुई, फिर उसके बाद में ये था कि यार अच्छा और कैसे काम ढूंढे क्या करें. तो फिर मसान के बाद में पहली बार हुआ कि मुझे स्क्रिप्ट आने लगी थोड़ी सी, बट एवरी स्क्रिप्ट वुड बी बेस्ड ऑन अ यूपी बेस्ड कैरेक्टर, यूपी बॉय. तो हर कैरेक्टर वही बनारस से ही था. तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मतलब मुझे वो नहीं करना, मेरे अंदर और भी है जो मुझे लगता है, अब मैं बहुत नया हूँ, शायद नहीं भी है, पर लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी वेट इट आउट. मसान होने के बाद कुछ 6-8 महीने मैंने काम नहीं किया और ना मिला, क्योंकि जो आ रहा था वो वही था, मसान के मिलियू का था जो मुझे करना नहीं था. और फिर आई थिंक अनुराग सर से आया मुझे कि यार रमन राघव के लिए, वेयर ही सेड अच्छा क्या करा. आई रिमेम्बर आई वाज एट पृथ्वी थिएटर में कोई शो देखने गया था, एंड ही सेड एक मेरे को स्क्रीन टेस्ट लेना तेरा, आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर द पार्ट. दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. But I feel like I should test you and see if you have it in you. And it was like a cop's role and like a very dark film, and it was fully opposite from who I was. I've lived a very protected upbringing, जो मेरी रही है, family, you know, no complexities as such. तो एक simple सी life रही है, और उस character की complexities बहुत थे. This is something I don't understand about you. What? कि you're genuinely a very simple guy. पता चल जाता है किसी को भी if they listen to you. But the characters you play and performances are very layered and complex. I don't know how you are able to do that. I don't know, man. I don't know. But yeah, but उसका ऑडिशन हुआ, उसमें फिर I was like यार मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं कैसे समझूं this like, you know, he has this hate against his father, his upbringing, he's got so much angst and resentment inside him that he's like, he doesn't know when he goes this side of the line and that side of the line, he doesn't know where he is, but he's a cop. So मैंने कहा यार, and I was 26 at that time. So I was kind of like, जो भी करके मैंने audition दिया, and he said कि यार नहीं ये नहीं. But then he's like, no, but I saw something in your eyes where I feel I can take you to the character. I was like, okay, and then I did that thing, but which till date I feel like that's my worst performance, like Raman Raghav. I feel like not because as in like performance, but I feel कि यार मैंने अपनी life उतनी नहीं जी थी जितना उस character की requirement थी. It is not just कि costume पहन के वैसे expressions दे दो और वैसे dialogue honestly बोल दो conviction के साथ, but some characters require you to live a certain life also. That was one of them. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे वो opportunity मिले तो मैं कुछ और पहलू उसमें दे सकता हूँ. And in fact, every 5 years, if I get that opportunity again, I'll bring you something else into that role. It was just the role was that kind of dimension to it. Then of course film I don't know how to kind of see कि क्या सीखा, but छोटे चीजें कई बार ये होता था कि अच्छा ये PR came very late into my life. कि ये क्या होता है कि you know, and आज तक like I'm not a very PR friendly person because मुझे लगता है कि यार काम बोलेगा ना यार, अब उसमें अब मैं क्या बोलना है मुझे. Go tell the Instagram algorithm that. क्या no, but seriously, like I understand when you have work and you want to push that work ahead. I understand that. But अब मैं क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता. I know it's a requirement. I have a PR team, but they have a very difficult time with me because really, yeah, because like they like come with ideas and I'm like
पागल हो गया, क्या कर रहे हो यार, पागल हो गया। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये यार अच्छा काम पहुंच जाता है। Can I give you a PR angle? हाँ बोलो। I have a marketing company as well. So I know what I'm talking about. हाँ I feel you should do more podcasts in general. और ये मैं Really? podcasting के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ and I've never done podcasts. No, I think I might have done on a smaller scale, but this is the first proper one. I don't mean you do one every month, हाँ but at least do one every year and go on different podcasts if you want. अच्छा But आप बहुत स्मार्ट हो and आप कम्युनिकेट कर पाते हो. okay. This is all you need for the show. Yeah. For shows like this. मतलब जो आपके दिमाग के अंदर है, you're able to explain to an engineering junior. एग्जाम में ये कर ले. But हाँ यार, ये सारी चीजें है, जैसे like I suck at marketing, I suck at doing PR or whatever. Like I love it when like a film comes out and my work is like doing the talking. I love that. I find confidence in that. I feel like a certain strength in that. I'm assuming कि आपने क्राफ्ट पर काम किया, डायरेक्टर के साथ बैठकर सीखा एक्टिंग के बारे में, और लाइक हर डायरेक्टर के साथ आपने हर डायरेक्टर से आपने बहुत कुछ सीखा. उसके बाद हिट फिल्म्स के आने के बाद आपकी लाइफ में आपने ये सब PR, स्टाइलिंग, इन सारी चीजों के बारे में सीख लिया. या वो भी सीख रहा हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा सीख लिया, ओके, पर सीख रहा हूँ. लाइक हाँ सीख रहा हूँ. ये एक बहुत फेमस चीज है कि आप ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते. जब मैंने इसमें लाइक रमन राघव made me a smoker because like उसमें बहुत हर रोल, हर सीन में, हर इसमें करना था. And I was like, while I was shooting that film, I was probably smoking like 2 packets a day or something, because it was just like लंबे shots, and that's the first time I was smoking. I was like, क्या करा रहे हो सर? But obviously I had to quit. Like I quit that after the film, and फिर drinking शुरू में बिल्कुल नहीं था. Like मसान के वक्त when I had for that scene was तब scenes के लिए होता था. But now it's like very occasionally, like Okay. यार दोस्त की शादी है, and you like those one-off nights in the year or something, very occasionally. But I don't drink. ये मुंबई में एक urban legend है फिर क्या? कि आप fully एकदम शुद्ध हो, you say no to alcohol and No, I do. Okay. Like मैं कभी अगर आप मुझे मिल जाओगे social gathering में and everything, I don't drink. Like firstly, मुझे वो समझ में भी नहीं आता that 1-2 drink, socializing, chit chat, okay bye, nice to meet you, go home. मुझे वो समझ नहीं आता. साल में फिर वो 1-2 रातें होती हैं कि यार बहुत जिगरी दोस्त की शादी है, ये है वो है, फिर बिल्कुल, but it's like then a party, it's like an expression of joy then. But I don't understand, and I'm not fond, like it's not something that stimulates me at all. कि यार holding a drink, having a glass or 2 or something, it's not my vibe at all. That's not what I do. I don't like to do also, so and not like as a discipline. It's just not come to me naturally. Okay. क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है? No, Not at all. अगर आपने अच्छा काम किया तो that's one of the biggest myths. नेटवर्क नहीं करना No, पड़ता. I'm saying if you want to do quality work that is like strong, where you want like people to reach out to you for work rather than you being there out there. Of course, I'm not saying networking in terms of like the false facade networking. Like where you feel like just because you're friends, just because you are having coffee and chai with them, and like being a part of social gatherings, उसके वजह से आपको काम मिल जाएगा, कभी नहीं होगा. नहीं होगा. आपको काम आता है तो ही काम मिलेगा. Of course, कि अगर आप if you've reached out to them in their offices and met them in their offices and you build that sort of a relationship that listen, I want to work with you and this and that, then you become friends. Of course, that's a different story altogether. But just that एक बीच में, क्योंकि ये भी मैं शुरू में बहुत देखता था कि यार उस पार्टी में जाना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ, so that I'll get to meet that guy and that's how I'll get work. कुछ नहीं होता. Never. In fact, they've judged you in the complete opposite way. In the complete opposite way. कि ये यहाँ काम के लिए आया. कि यार ये हर जगह दिख जाता है पार्टियों में, ये वो, तो ये काम में तो ये बिल्कुल like you'll, and they'll be very nice to you. They'll be very nice to you because they're nice people. But like मैं ये बोलूँगा like, and I'm sure that's like any other industry, but Bollywood में when they're like work mode, they are work mode. Yeah. Of course, they have their downtime. They will party and they will have their relaxed dinners and whatever, the social gatherings and everything. But when they are work mode, they are like, it's a very unemotional side. It's a very this thing. It's like strictly business. You're working and we need good actors. We need good actors. We need good technicians. We need good technicians.
It's not necessary. We're not there to make friends. You become friends, that's a different story. That's great. But it's like you need the best person for the job. There's a lot of money involved. There's a lot of reputation involved. There's a lot of risk involved. वो आपको काम से ही आएगा. And in fact, they'll respect you more. If You're a great part of the team rather than if you're a great part of the team and you know your job. And that happens in all walks of life. Like, if tomorrow, like, I happen to meet you at a party or whatever, we'll be pleasant to each other. We'll meet nicely and whatever. We'll exchange numbers and that's great. When will I have respect for you? When I know that, boss, you're a man of substance. You know what you're talking about. You know your job. That's when I'll be like, okay, I take him seriously. I respect his viewpoint. I respect you. So focus on your job. Focus on your job. And in fact, I will say that even if you're not friends, even if you don't know them and whatever, if you're constantly working on your job and you're putting it out there and you're trying your best to network like that as a professional, they will become your friends. Yeah. They will. I feel कि आज की दुनिया में your work is your best PR. Sure. I would also, maybe I'm saying it from a biased perspective, but social media is a great PR tool. यार बहुत मुश्किल होती है यार संभालने में. मतलब यार I'm the most active during like films. आप कह रहे हो? हाँ भाई. आपकी सोशल मीडिया गेम बहुत सही है. सही में? हाँ. I think you know this. यार मुझे एक तो जैसे पहले ना बोला था एक डिजिटल टीम होती है ये वो and with all due respect to the digital teams, but मुझे समझ नहीं आता like because I don't want anybody to sit on my head saying कि यार post something you haven't posted in 5 days. Because यार वो मुझे थोड़ा सा एक line draw करनी है between what's real and what's not. Like for like my work is not social media. Of course, I want to connect with my audience through social media. I want to connect because that's where it's me. It's not my character. It's not my brand. Sometimes the brand also now because the lines are blurred when there's a lot of branding in social media. But मुझे personally, sometimes I need a detox from social media, and I do that. I don't go off social media, whatever, but I just stop using it for some time. I'll tell you what traditional media houses don't understand about social media. I know that. Because it's my bread and butter. Yeah. Social media changes every 6 months. Yeah. And honestly, आजकल social media बहुत ज़्यादा smart हो चुका है. क्योंकि भारत के interiors में भी लोगों के पास access है. No, it's a super duper strong medium. It's a great medium. But I'm saying you need to have a right conversation to have, like, and that comes with who I am personally. Like, if you sit with me in a room where there are no cameras or nothing, it's very easier for me to just sit silent if I don't have anything to talk to you, and I will be like that. But if I have something to say to you, I will say that. Like when I have something to say on social media, I will post like 3 posts a day. But if I don't have anything to tell you or show you from my life, I don't want like to feel like it's a necessity for me to do that. That's something where I draw the line. Okay. Just for my own sanity. Okay. It's for my peace of mind. Like nowhere I want to feel validated because like through like I don't know how to put it, but like कि यार मुझे ये करना पड़ा क्योंकि 4 दिन से नहीं किया. That's the only motivation that I shared something with you guys. वो मुझे थोड़ा अभी तक like I'm not like. I think that's correct thinking honestly. Yeah. On social media. मतलब वो you can take 2 weeks, 3 weeks off if you want, but the content should be quality. और वो quality content फिर से flow state से निकल के आता है. Yeah. जो फ्लो चार्ट हम डिस्क्राइब कर रहे थे विकी कौशल, उसमें आपकी वाइफ ने क्या ऐड किया? प्रोफेशनली स्पीकिंग, आई एम श्योर आपने कुछ तो सीखा होगा. कटरीना कैफ ने क्या ऐड किया आपके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 101 के फ्लो चार्ट में? क्या सीखा उनसे? On the surface level, she's added what kind of clothes should I wear? Because she's like, क्या जोकर बन के जा रहा है ये? So she would be like, cut me out, like she's literally held my hand and pull me back, like saying, you're not stepping out of this house wearing this. I'm like, इसमें क्या गलत है? सब कुछ. Like okay, ठीक है. Like simple कपड़े पहन. मैंने कहा अच्छा ठीक है, simple ही तो पहनता था मैं कौन सा. But jokes apart, I would say. Like I learn a lot of like she's a beast when it comes to like when she has like a song or an action sequence coming and everything. I've seen her like she is disciplined like I've not seen like many people being disciplined, and I have really learned that a lot from her. Because when it comes to like when like there's this sequence coming or there's this that coming, she goes mental like 5 months back before that, and she's like
diet changes, this changes, that changes, and then I realized कि यार ऐसे ही नहीं है, you know, ये she's achieved that reputation when it comes to certain things because she puts in that work until date, and that's what stimulates her. She doesn't do it with an attitude कि अरे यार ये करना पड़ता है. She's like then super unemotional about it. Like you got to do what you got to do, and that I've really like kind of that helps me sometimes as a reminder that you know just you got to do what you got to do if you really want the rewards for that, and that is something remarkable about her. आप क्रिकेट देखते हो? Yeah. ओके मैंने जितने भी क्रिकेटर्स आए उनसे ये पूछा कि व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट एट इंटरनेशनल लेवल. इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग मेंटल गेम सेपरेट्स द बेस्ट. ठीक है, मेंटल साइड के अंदर क्या. तो उन्होंने कहा हर किसी के पास इंटेंसिटी होती है टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट, बट टू कीप दैट इंटेंसिटी गोइंग फॉर वेरी लॉन्ग दैट इज व्हाट्स चैलेंजिंग. पर आपकी इंडस्ट्री में यही है कि इंटेंसिटी हैज टू बी स्ट्रेच्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा ब्रूटल सवाल है आपके लिए. हाउ डज इट फील टू बी विकी कौशल राइट नाउ? क्योंकि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से आपका करियर फ्लाई कर रहा है. हाउ डज इट फील? He's great. He's great because बहुत मेहनत गई है यार. सच में बहुत रगड़ाई हुई है यार. मतलब वो अभी देख के पीछे डर लगता है, तब नहीं लगता था कि मेहनत हो रही है, बहुत रगड़ाई हो रही है, नॉकिंग ऑन द डोर्स, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन. बट नाउ व्हेन यू लुक बैक में लगता है कि यार अब नहीं शायद कर सकता हूँ मैं, अब मेरे में है नहीं वो, क्योंकि मैंने ये देख लिया. सो पर उसकी वैल्यू है कि यार अच्छा लगता है, एंड यू like I like hold it to my chest like that कि यार ये इसको बढ़ाना ही है, इसको कम नहीं करना है. You know, if I today say that Sam Bahadur is the toughest role I've done, I want to change that in my next film. I want to be able to say that no, you know what, I've topped that. This is my toughest role now, and I want to keep pushing myself to that level. Success होता है फिर वो मेरे हाथ में ही नहीं है, but at least I want to feel that I gave it so much कि हाँ success की गुंजाइश है. तो वो तो मुझे करना ही है. सो अभी जो हूँ, जैसा भी जो भी चल रहा है लाइफ में, फर्स्टली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड बिकॉज कभी नहीं सोचा था यार, छोटे छोटे रोल से शुरू किया था. तो अब जब भी ऐसे मौके मिल रहे हैं, इतना ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. और तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत 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 स्पेशल है. यू नो, इसको सेफ गार्ड करो. Each and every person coming to me for a selfie or an autograph means the world to me, because I have walked on the streets, not anybody knowing me, and I've wanted to change that. And now that it's changed, I don't want, like, I want more of it. And मुझे कई बार पूछा भी जाता है कि यार don't you get tired? People who are coming to me for selfies and they've seen me for 10 minutes कि यार ठीक है हाँ ये कर रहा था, they only ask यार I'm tired for that. मैंने कहा नहीं यार, there's something I was doing for many years that was tiring for me to get this from you. So I want 24 hours of this. So it's a good feeling. It's a feeling of gratitude, and it motivates me also. यार, this time that is going on. करियर को लेकर खुद का गोल क्या है? What do you mean? कहाँ तक लेकर जाना चाहोगे? गोल क्या है यार? जहाँ तक हो सके यार. I have not put a finish line for myself. It's like that checkered flag is a mirage for me. I wanted to be there, but I don't want to reach there because you know, as they say that the wolf climbing the hill is always hungrier than the wolf on the hill. So I want to be the wolf climbing the hill, and I want to keep seeing that peak, and the peak I should never reach. Because every time once you reach there, you've reached there. Now what? You're going to come down only, you know, or you stay there. But I just want to keep climbing. So goal is something that I'll probably set a new goal every year, every phase, every few years. But I just, whatever the limits are for this profession or whatever, I want to achieve them all. सक्सेस मैट्रिक है आपका? नहीं यार, बिल्कुल नहीं. रात को बेड पे नींद अच्छी आए, बस डेली सक्सेस मैट्रिक है. Okay. मतलब literally, and that is a very holistic success metric, because success is not just for me, it's not just a job. Okay. It's for me as a husband, it's for me as a son, it's for me as a brother, it's for me as an actor, it's for me as a public figure, it's for me as everything put together. I need to feel successful, not just as an actor. और इस जर्नी में अपल क्लाइम में ट्रेड ऑफ क्या है? Social life, शायद not, I won't say like friendship,
बट उतना मिल नहीं पाते जितना आप चाहोगे. प्योर फ्रेंडशिप. प्योर फ्रेंडशिप तो रह जाती है. That's not dependent on the number of times you meet them or talk to them. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ लैक ऑफ न्यू प्योर फ्रेंडशिप. नहीं, I feel like वो new pure, when you're saying pure, it's a very like a meaning pure. प्योर फ्रेंडशिप्स वो इतने रेगुलरली होते भी नहीं है किसी के भी लाइफ में. वो आते हैं और फिर आते हैं रह जाते हैं. वो और वो अपने आप होते हैं. वो ऑर्गेनिकली होते हैं. वो तुम प्लान नहीं करते हो. यू आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये प्योर होने वाला है, पर ये हो जाता है. सो वो तो जब होना है वो होगा ही. वो कोई रोक नहीं सकता. बट आई फील कि हाँ, जब जैसे लाइक माई कॉलेज फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स है सारे, I love them to bits, and that really is like one part of my life which I can call like truly like family, which they are. But I sometimes don't get to meet them as much as I would want to, spend time with them as much as I would want to, and so many times I like really feel FOMO'd. Yeah, I can't, I'm not there or whatever. But that's a very small price you pay, and thank God that they are true friends because they understand. Okay, this is what you mean by social life, lack of social life. Yeah, just this factor. Yeah, कि ब्रोज के साथ में अभी ग्रुप. पर मेरा बहुत वो the true social circle मेरा बहुत छोटा है. बहुत छोटा. It's like my family and these friends and a few friends from the industry. But उसके अलावा जो social life है वगैरह वगैरह वो तो चल ठीक है यार. वो तो आएगा जाएगा. कुछ करोगे आप अटेंड, कुछ नहीं करोगे वो that's a different story. Are you comfortable naming who from the industry? Yeah, there's Amritpal Singh Bindra, there's Anand Tiwari, he's a director. I've gone for his drama coaching when I was a kid. Really? Yeah, Anand told anyway. He had directed these two guys, I met them during Love Per Square Foot. And Anand's wife Angira, who was my co-star, these guys are like family. And हाँ ये है और शायद एक दो और हैं जो मुझे नहीं आ रहे दिमाग में, but there are a few people. Okay, विकी कौशल, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि you are the शान of Indian engineering students. This was a lot of fun talking to you, honestly. I hope you also had fun, bro. Wow, these are the closing lines? Yeah. Wow, yeah, I didn't feel like for me also it's like it's fun for me where I feel like I had a genuine chat. Where like it's not a presentation of who I am, what film is coming up or whatever. It's just we're just having a conversation and hope like I'm sure that's how it's gonna reach them. But it was like it really was fantastic being here and connecting to you and connecting to your viewers through the show. And I'm just very thankful for having me on the show, so thank you for that. No, I have some last things to tell you, not to ask you. Okay. तो हर पॉडकास्ट के थ्रू मैं मेरे गेस्ट के बारे में जानता हूँ. Okay. The whole intention of the show is to get into your heart, rather than just your mind. जो मैंने स्टार्ट में कहा, and I know you're aware of this, but maybe I'm just repeating myself. You're a very, very blessed human. आप डेफिनेटली मेहनती हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप थिंकर हो, आप इंजीनियरिंग ग्रेड हो, पर उसके साथ साथ देयर इज अ बिग रोल ऑफ destiny in your life. Very, very big role to get selected for particular parts. 100%. Even from the start. 100%. इन जॉब मसान के बारे में कह रहे हो, why were you the AD with the actual director? Yeah. So there's too much destiny that's gone into your life, and it's very obvious even from the outside. This is what I knew about you before I actually spoke to you today. So I'm just very, I won't say curious, I'm very happy and excited to see that hill that you're climbing on. Because maybe you don't want to look at the checkered line and maybe there's no checkered line, but we can like see it. So it's great, bro. I just wish you all the luck. Thank you, Ranveer. Really, it's very, very nice talking to you just as a guy. Forget even the engineering college stuff. For once we need to forget that. But yeah, यही कहना था. Maybe I'm just being PR for. मजा आया. Seriously मजा आया. तो जाने से पहले on behalf of Team TRS and Mountain Dew, we have a little gift for you, bro. है हिम्मत और डर. ये आपके प्री संजू और प्री उरी फेज के लिए. डर के आगे जीत है करेज अवार्ड. डर के आगे जीत है करेज अवार्ड.